I am Dr.Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in Banwari Lal Jindal Suibala College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver a lecture in programming in C and numerical methods for the class BA, BSc, second year, semester 4th. The topic that I cover today is Newton-Raphson Method, comparison of the iterative methods. But we have done bisection method, regular falsi method, secant method, and Newton-Raphson method. The comparison of iterative methods, the following are the three main factors on the basis of which the comparison of various iterative methods can be done. One is sensitivity of the method of the initial approximations. जो आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हो वो उसकी सेंसिटिविटी किस मेथड में कितनी है. नंबर 2, रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना है. नंबर 3, कंप्यूटेशनल वर्क रिक्वायर्ड एट ईच आइट्रेशन, कितनी हमें कैलकुलेशन वर्क करनी पड़ती है, कंप्यूटेशनल वर्क करना पड़ता है. ए ब्रीफ समरी of various iterative methods is shown in the following table. फर्स्ट मेथड हमने किया था मेथड बाइसेक्शन मेथड. फॉर्मूला इसका था xi+1 आइटरेटिव फार्मूला इज इक्वल टू xi-1 प्लस xi/2. ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसकी 1 है. रिलायबिलिटी कितनी है, root lies in the interval xi-1 and xi and the convergence is slow but guaranteed. slow तो है लेकिन इसकी कन्वर्जेंस गारंटेड है कि वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी. रेगुलर फाल्सी मेथड का आइटरेटिव फार्मूला xi+1 इज इक्वल टू xi-1 minus xi-1 divided by fxi-1 into fxi-1 और इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.618 है. रूट लाइज इन द इंटरवल xi-1 xi and order of convergence is guaranteed. Here is also order of convergence is guaranteed and order of convergence of this regular falsi method is more than bisection method. Now Newton-Raphson method, the order of convergence is xi+1 equal to xi minus fxi divided by f dash xi. टू है इसकी सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किसकी, सीकेंट मेथड की. न्यूटन-रैप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सबसे ज़्यादा. दिस मेथड इज़ वेरी सेंसिटिव, लेकिन सेंसिटिव है मेथड टू द इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू आप क्या चूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है. एंड कन्वर्जेंस इज़ फास्ट, कन्वर्जेंस फास्ट होती है लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या लेते हो उस पर ये मेथड न्यूटन-रैप्सन मेथड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज सीकेंट मेथड xi+1 इक्वल टू xi-1 minus xi-1 divided by fxi-1 into fxi-1. ये सीकेंट मेथड का आइटरेटिव फार्मूला है. जो रेगुलर फाल्सी मेथड है और सीकेंट मेथड है, फार्मूला आइटरेटिव फार्मूला सेम है दोनों में. ऐसा कैसे देखना पड़ेगा. इज इक्वल टू 1.618. इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट द रूट लाइज इन द इंटरवल
एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इसमें रूट लाई करे या ना करे, द मेथड इज़ वेरी एफिशिएंट बट नो गारंटी ऑफ कन्वर्जेंस। मेथड बहुत एफिशिएंट है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कन्वर्जेंस की इस मेथड में। As a conclusion, we can say that the bisection method is quite slow as order of convergence is 1, but it is least affected by initial values. Initial values पे ज़्यादा ये लिस्ट कम से कम affected होता है. On the other hand, Newton-Raphson method is very fast as its order of convergence is highest, 2 होता है, but this method is very sensitive to the initial approximations. So this is comparison of 4 methods: bisection method, Regular-Falsy method, Newton-Raphson method and secant method. Now we will give example of Newton-Raphson method. Find the real root of x की 4 minus x minus 10 equal to 0 by Newton-Raphson method, which is near to 2 के नज़दीक होना चाहिए, correct to 3 places of decimal. Let f x equal to x की 4 minus x minus 10, तो इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश x और x क्यूब minus 1, f bracket 1 equal to minus 10 and f of 2 equal to 4. Therefore, root of equation f x equal to 0 lies in the interval 1 2 and is close to 2. That is to find not nearer to 2, let the initial approximation be x not equal to 2. रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 and 2. 1 और 2 पे क्या होता है, देखो f of 1 पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स में तो नेगेटिव आता है, चेंज ऑफ साइन आता है, f of 2 पे +4 आता है, f of 1 पे -10 आता है, तो देयर इज चेंज ऑफ साइन। जहाँ पे चेंज ऑफ साइन होगा रूट उसके बीच में लाई करेगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में चेंज ऑफ साइन आता है एफ एक्स में, इसलिए रूट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। Thus to find root nearer to 2, thus therefore root of the equation lies in the interval open interval 1 2. Let the initial approximation be x not equal to 2. Now by Newton's-Raphson method we have xi plus 1 equal to xi minus fxi divided by f dash xi. Therefore xi plus 1 equal to xi minus x की 4 minus xi minus 10 divided by 4xi cube minus 1 is equal to 3xi की 4 plus 10 बटे 4xi का क्यूब माइनस 1। नाउ x1 क्या होगा, 3 पुट 2xi इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट की है, 2 की पावर 4 plus 10, 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 1.871, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई किया इसने, x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, 1.8714 प्लस 10 डिवाइड 4 इंटू 1.871 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 1.85578 इक्वल टू 1.856। Therefore x2 equal to 1.856 की पावर 4 प्लस 10 और 1.856 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 1.856। Hence 1.856 is the required root correct to 3 places of decimal, and we have seen that we have only 3 approximations. We will derive the answer. Solve the this is transcendental equation log x to the base equal to cos x by Newton-Raphson method, correct to 4 places of decimal. Let fx equal to log x to the base e minus cos x. Therefore f dash x equal to 1 by x plus sin x. It is clear that fx is negative for x equal to 1.3 and positive for x equal to 1.4. This is inspection. Thus the root of the
equation fx equal to 0 lies between 1.3 and 1.4. Now by Newton-Raphson method we have xi plus 1 equal to xi minus fxi divided by f dash xi. Putting the value of fxi log xi to the base e minus cos xi, derivative 1 by xi plus sin xi. Taking initial approximation x not equal to 1 by 1.3, putting this x1 equal to 1.3 and taking log of 1.3 to the base e, and taking value of cos 1.3 is equal to 0.26750 from cosine tables and sin 1.3 from sine tables 0.96356 equal to 1.3029. Dear students, this log table is allowed in examination, so you may ask to the examiner or to provide us log table, and you carry with you yourself a simple calculator, because calculation work can't be done manually. In points it is very difficult. If either you will carry log table with you and check with the examiner that there is no material inside written which is affected as unfair means. The 1.302629 minus this comes out to 1.30295. And third approximation, put this value second approximation in third approximation, and this value comes out to be after simplification 1.30295. Therefore x2 equal to x3 equal to 1.30295. Hence the root of the equation correct to 5 places of decimal is 1.30295. Now Newton-Raphson Iterative Formula by finding the inverse, square roots, etc. This is article. न्यूटन आइटरेटिव फार्मूला किसके लिए? फॉर फाइंडिंग इनवर्स, इनवर्स निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, ईटीसी, उसके लिए न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होगा? ये एमडीयू 2014-12 में आया हुआ है. द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ ए नंबर कैपिटल एन कैन बी कंसीडर्ड एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 1/x माइनस एन इक्वल टू 0. x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, 1/x माइनस एन इक्वल टू 0, विच कैन बी सॉल्व्ड बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड एज फॉलोज. fx, लेट fx इक्वल टू 1/x माइनस एन. देयरफॉर डेरिवेटिव क्या हुआ इसका? -1/x स्क्वायर. नाउ बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड वी हैव xi + 1 = xi minus fxi divided by f dash xi. Therefore xi + 1 = xi minus 1/xi minus n divided by -1/xi का स्क्वायर इक्वल टू xi + xi minus कैपिटल N and xi का स्क्वायर, और xi + 1 = xi 2 minus n xi. ये क्या है? इनवर्स जब दे रखा हो किसी नंबर का तब ही ये उसकी आइटरेटिव फार्मूला क्या बन गया? xi + 1 = xi into 2 minus n into xi. It will be remembered for inverse. स्क्वायर रूट के लिए न्यूटन आइटरेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर कैपिटल N कैन बी कंसीडर्ड एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² - n = 0, विच कैन बी सॉल्व्ड बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड एज फॉलोज. Here fx = x² - n, therefore f dash x = 2x. Now by Newton's-Raphson method we have xi + 1 = xi minus fxi divided by f dash xi. Therefore xi + 1 = xi minus xi का स्क्वायर minus n/2xi
implies xi plus 1 equal to half xi plus n बटे xi। fx क्या है, स्क्वायर है यहाँ माइनस एन, डेरिवेटिव 2x हो गया। न्यूटन रैप्सन मेथड में पुट किया xi plus 1 इक्वल टू xi माइनस एफ xi बटे एफ डैश xi। एफ एक्स आई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एन, एफ डैश एक्स आई क्या है 2xi। तो ये इसमें जब स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, तो उसका आइटरेटिव फार्मूला क्या हो गया, xi plus 1 इक्वल टू हाफ xi plus n इंटू xi। नेक्स्ट इनवर्स स्क्वायर रूट निकालना है, इनवर्स स्क्वायर एक्स रूट, तब आइटरेटिव फार्मूला न्यूटन रैप्सन का, द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ नंबर n कैन बी कंसिडर्ड एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 1/x स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 0। इनवर्स स्क्वायर, नाउ एफ एक्स क्या 1/x स्क्वायर माइनस n, ये ले लो, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या हो गया -2 बटे एक्स क्यूब। नाउ बाई न्यूटन्स रैप्सन मेथड भी है xi plus 1, ये न्यूटन रैप्सन मेथड की आइटरेटिव फार्मूला है xi माइनस एफ xi बटे एफ डैश xi। देयरफॉर xi plus 1 इक्वल टू xi माइनस 1 बटे xi स्क्वायर माइनस n बटे -2 बटे xi स्क्वायर क्यूब। xi plus 1 माइनस n, इसको सिंप्लीफाई किया n xi स्क्वायर बटे xi का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया xi का होल स्क्वायर, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बटे एक्स क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बटे 2 xi 3 माइनस n xi का स्क्वायर। तो ये आपकी आइटरेटिव फार्मूला हो गया। जर्नल फार्मूला फॉर पीटीएथ रूट, the pth root of a number n can be considered as a root of equation x की पावर p minus n equal to 0। एक जर्नल फार्मूला निकाल रहे हैं, तो हेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर p माइनस n, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू p एक्स की पावर p माइनस 1। ना बाई न्यूटन्स रैप्सन मेथड भी है xi plus 1 इक्वल टू xi माइनस एफ एक्स आई डिवाइड बटे एफ डैश एक्स आई। Therefore xi plus 1 इक्वल टू xi माइनस xi की पावर p माइनस n बटे p इंटू xi की पावर p माइनस 1, डेरिवेटिव ले लिए p xi की पावर p माइनस, और इम्प्लाइज xi प्लस 1 इक्वल टू p माइनस 1, सिंप्लीफाई करो इसको, एलसीएम लो p xi की पावर p माइनस 1, तो p माइनस 1 xi की पावर p प्लस n। यह journal formula for reciprocal of pth root, journal formula of pth root, and अब now reciprocal of pth root, the reciprocal pth root of a number n can be considered as a root of the equation 1/x की पावर p माइनस n इक्वल टू 0। हेयर एफ एक्स क्या है, x की पावर माइनस p माइनस n है, और एफ डैश एक्स क्या है माइनस p आगे आ गया, x की पावर माइनस p माइनस 1। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में पुट कर दे इसको, xi plus 1 इक्वल टू xi माइनस एफ एक्स आई डिवाइड एफ डैश एक्स आई। तो ये xi plus 1 इक्वल टू xi प्लस माइनस xi की पावर माइनस p माइनस n डिवाइड बटे माइनस p xi की पावर माइनस p माइनस 1, xi प्लस xi बटे p माइनस n इंटू xi की पावर p प्लस 1 बाई p, और ये p इज इक्वल टू p, एलसीएम आ गया p xi प्लस xi माइनस n xi की पावर p प्लस 1। देयरफॉर xi प्लस 1 इक्वल टू xi बटे p प्लस 1 माइनस n इंटू xi की पावर p। तो दीज आर न्यूटन रैप्सन्स डिफरेंट आइटरेटिव फार्मूलाज फॉर फाइंडिंग इट्स इनवर्स स्क्वायर रूट etc। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन view this lecture online on college website BLJS college COLLAG college.com, or you can also view from college channel on YouTube. If any query or question, you are most welcome, you can ask me. Thanks a lot, thank you.